When we talk about respiration, beta, we know that respiration is a very, very crucial metabolic reaction that takes place inside your body, not just in your body, but also inside plants. What exactly is respiration? So when we talk about respiration, ये एक process होता है in which there is breakdown of food particles, and this breakdown of food particle that takes place is nothing but when there is breakdown of complex compound. कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड के अंदर एक एनर्जी स्टोर होता है। तो जब ये बॉन्ड टूटा जाता है तब एनर्जी रिलीज होता है और उस रिलीज्ड एनर्जी से एटीपी सिंथेसाइज होता है। हाउएवर, जब एनर्जी ब्रेकडाउन होता है तो आउट ऑफ 100%, 60% of energy is released or utilized in the form of heat, whereas only 40% of energy is stored in the form of ATP। ये चीज हमें याद रखना होगा बेटा। 60% एनर्जी जो होता है वो हीट के फॉर्म में प्लांट जो है वो रीयूज कर लेता है या एनिमल्स जो है वो रीयूज कर लेता है, लेकिन 40% एनर्जी होता है जिसको स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपीस। करेक्ट। ये एटीपी बाद में इस्तेमाल किया जाएगा ताकि हमारे नॉर्मल सेल के जो डे टू डे प्रोसेसेस होते हैं या सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं उसको हम परफॉर्म कर सके। इसके अलावा रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे तो ये एक कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक रिएक्शन होता है। इसमें कैटाबॉलिक रिएक्शंस यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को तोड़ तोड़ के सिंपलर में कन्वर्ट किया जाता है, ये एक प्रोसेस भी होता है। प्लस इसमें एनाबॉलिक प्रोसेस यानी कि छोटे छोटे केमिकल्स को जोड़ जोड़ के बड़े केमिकल्स में बनाना, ये प्रोसेस भी होता है। और क्योंकि दोनों ही प्रोसेस होता है इस वजह से इसको हम एम्फीबॉलिक पाथवे कह सकते हैं। रेस्पिरेशन कैन आल्सो बी रेफर्ड एज एम्फीबॉलिक पाथवे। ऑलराइट बेटा। Furthermore, it's an oxidative process. That is because जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उन ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज किया जाता है तब जाके एटीपी बनता है, जिस वजह से इसको ऑक्सीडेटिव प्रोसेस कहा जाता है। इट इज एन एक्सोथर्मिक, ये गलत लिखा है, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब कोई भी सबस्ट्रेट टूट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है रेस्पिरेशन के दौरान तब एनर्जी रिलीज होता है जिसे हम एक्सर्गोनी कहते हैं, और जब ये एनर्जी हीट फॉर्म में रहेगा तो इसको हम एक्सोथर्मिक कह सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन के दौरान जनरली कॉम्प्लेक्स केमिकल जब सिंपलर में कन्वर्ट होता है तब जो एनर्जी रिलीज होता है वो of course मतलब energy release होता है। that means from higher energy compound you get a lower energy compound, and thus the reaction is also called as downhill process। downhill यानी higher से lower की तरफ आना, तो यहाँ पे higher से lower की तरफ energy आ रहा है इसलिए इसको downhill कहेंगे। अब ये प्रोसेस जनरली सभी में होता है, like every living organism performs respiration। so when you talk about respiration in plants specifically, first question that comes up is, do plants respire, do they breathe? The answer for that is absolutely yes, they do breathe. There is gaseous exchange that takes place, and this gaseous exchange is by three means. It can be through stomata, it can be through lenticels or through epiblema। स्टोमाटा के थ्रू गैशियस एक्सचेंज होता है, ये हमें पता ही है बेटा। सो स्टोमाटा के थ्रू जो गैशियस एक्सचेंज होता है दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 90% के आसपास, 85 to 90% जो गैशियस एक्सचेंज होता है दैट इज थ्रू स्टोमाटा। whereas lenticel से 0.1 से 1% का गैशियस एक्सचेंज होगा। एंड एपिब्लेमा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हिच इज नथिंग बट एपिडर्मल सेल्स जो रूट के सरफेस पे होते हैं, इनके द्वारा you have somewhere around 5 to 10% of respiration that takes place, or 10 to 11% of respiration takes place through epidermal cells। all right beta। now question is that अगर plants respire करते हैं तो वो visible क्यों नहीं होता? जैसे इंसानों के नाक के आसपास हम रख देंगे तो हमें पता चलेगा कि रिलीज हो रहा है, गैसेस रिलीज हो रहा है, वैसे प्लांट्स के आसपास हमें क्यों फील नहीं होता? व्हाई आरंट प्लांट रेस्पिरेशन मोर टॉक्ड अबाउट? इसके बारे में ज्यादा हमको सिखाया क्यों नहीं गया, इसके बारे में ज्यादा बातें क्यों नहीं हुई? तो दैट इज बिकॉज बेटा प्लांट्स का ऑक्सीजन डिमांड काफी कम होता है। ठीक है, एनिमल्स को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होता है रेस्पिरेशन करने के लिए, प्लांट्स को उतना ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होता क्योंकि ज्यादातर ऑक्सीजन जो वो मिलता है उसको वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही मिल जाता है। तो एक सेल के अंदर जिसमें रेस्पिरेशन हो रहा है, सॉरी एक सेल के अंदर जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसमें जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वही ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल कर लेता है प्लांट।
जिस वजह से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लांट विल नॉट बी यूटिलाइजिंग, ओके, जिसकी वजह से प्लांट विल नॉट बी यूटिलाइजिंग एनी काइंड ऑफ, इट विल नॉट बी एबल टू यूटिलाइज, जिसकी वजह से प्लांट डज नॉट हैव अ हायर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। अपार्ट फ्रॉम दैट, जनरली ह्यूमन बॉडी में अगर देखेंगे या एनिमल के बॉडी में देखेंगे, तो जो ऑक्सीजन का डिमांड होता है वो पूरे बॉडी में होता है, और सारे सेल्स जो बॉडी के होते हैं उनको ऑक्सीजन मिलता है थ्रू देयर ब्लड, राइट? बट हियर इन द केस ऑफ प्लांट्स दैट इज नॉट सो। इन प्लांट्स क्या होता है, अगर किसी सेल को ऑक्सीजन का जरूरत है या रेस्पिरेशन करना है, तो वो सेल खुद ही वो काम कर लेता है, वो किसी भी दूसरे ऑर्गन पे या सब्सटेंस पे डिपेंडेंट नहीं रहता, जिस वजह से बाय डिफॉल्ट वी वुड से दैट respiration in plant is not as rigorous as that in animals. Alright. जब हम स्पेसिफिकली वुडी प्लांट्स के बारे में बात करें, यानी if we talk about gymnosperms और angiosperms, तो in them respiration मतलब gaseous exchange can take place through stem as well as through roots. जब रूट्स का बात करेंगे तो एपिब्लेमा के थ्रू रेस्पिरेशन होगा, स्पेसिफिकली जहाँ पे लूजली अरेंज पेरेन्काइमेटस सेल्स रहता है वहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है। Plus, along with that, stems में lenticels, loose parenchymatous cells, as well as hard woody dead tissues. इनके द्वारा there is gaseous exchange which takes place. Ultimately same ही है बेटा, कि जो हमारा जो जो लेंटी सेल्स रहेंगे जिसमें गैप होता है, उन गैप से यू विल हैव रेस्पिरेशन टेकन प्लेस, राइट? रेस्पिरेशन से भी एनर्जी मिलता है, कंबशन से भी एनर्जी मिलता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ सर? काफी ज्यादा डिफरेंस है बेटा। रेस्पिरेशन एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है, कंबशन एक नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस है, सीधा जलाया जाता है उसको, और इस वजह से इसको सिर्फ ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन कहेंगे हम। यहाँ पे रेस्पिरेशन एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है, एंजाइम इस प्रोसेस को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वहीं पे अगर हम कंबशन का बात करें तो इट इज नॉट कंट्रोल प्रोसेस। हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि कितनी चीजें बर्न होनी चाहिए, कितनी चीजें ब्रेक डाउन होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम यहाँ पे नहीं कंसिडर कर सकते। दिस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा है ये केमिकल प्रोसेस, whereas this is physiochemical process which is occurring outside the body. Here, the heat released is less, which is less than 50%, whereas here the heat released is more. Maximum amount of heat is released in this case. When we talk about respiration, we know that there are two types of respiration. You've got something called as aerobic respiration and something called as anaerobic respiration or non-aerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन का एक बेसिक फॉर्मूला होता है which is glucose along with the presence of oxygen gets broken down to give you carbon dioxide plus water and plus energy. The amount of energy that we get is 686 kilocalories of energy, which is almost equivalent to 38 ATPs. Remember this data, that this is almost equivalent to 38 ATPs. Very, very important. All right. वहीं पे जब हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन का, तो ये दो प्रकार की हो सकती है बेटा। एनारोबिक रेस्पिरेशन कैन बी अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक respiration generally takes place in lower plants, sorry, that means in lower animals, which is prokaryotes, and some lower unicellular eukaryotes. Like, if I have to give you an example, this can occur in bacteria, which is prokaryotes, right? This can also occur in unicellular eukaryotes, which is yeast. So this can occur in bacteria as well as in yeast. All right. Whereas lactic acid is something which generally takes place in muscle cells only. Majorly, it occurs in muscle cells. All right. Majorly, it occurs in muscle cells. Now, when we talk about alcohol, this is how the respiration takes place, wherein which year the amount of energy released is 2 ATPs, and here also you will have 2 ATPs. However, the amount of energy, as far as calculatively is concerned, is very, very less in lactic acid as compared to that in alcohol. All right. Let's go ahead. What's the difference between aerobic and anaerobic respiration? It's very, very basic, beta. We know this basic concept. That is aerobic respiration में ऑक्सीजन चाहिए, इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए.
इसमें there is complete oxidation of glucose, यानी there is complete breakdown of glucose, whereas anaerobic respiration में there is partial breakdown of glucose molecule. यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होता है वो ज्यादा होता है, विच इज 38 एटीपीज. यहाँ पे सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होता है, विच इज एनर्जी रिलीज इज लेस. एरोबिक रेस्पिरेशन जनरली साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है. एनारोबिक सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगा. ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो इस धरती पे दिखते हैं उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन ही होगा. हालांकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो किसी किसी प्रोकैरियोट्स में, और अदर आई वुड से सारे प्रोकैरियोट्स में, no, some prokaryotes and some special unicorn eukaryotes. Unicorn is special type of eukaryotes. Like yeast, may you have anaerobic respiration which is done, as well as in muscle cells you will have respiration take place, anaerobic respiration. This is the general pathway of how exactly aerobic and anaerobic respiration take place, which we need to understand. So when we talk about respiration in this case, glucose molecule gets broken down to give you pyruvate molecules, and this process is called as glycolysis, wherein there is partial breakdown of glucose. This occurs in cytoplasm. Pyruvic acid further will undergo some link reaction through which it will enter in mitochondria, where with link reaction along with the help of oxygen, it will help us in entering Krebs cycle. After Krebs cycle, it enters in ETS, that is electron transport system. And all of this reaction occurs in nothing but mitochondria, bringing up to something called as aerobic respiration. वहीं पे जब एनारोबिक रेस्पिरेशन का बात आएगा तो ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड टू पायरुविक एसिड which has two options. Either it will go to form lactic acid and ethanol, or it will go ahead for fermentation, which basically both of them occurs in cytoplasm only. दोनों के दोनों साइटोप्लाज्म में ही होते हैं बेटा. ठीक है. Let's try to go ahead with the first step of the respiration, that is nothing but glycolysis. जब बेटा ग्लाइकोलिसिस का बात होता है तो हमें एक चीज ध्यान रख के समझनी है कि ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा. Every living organism will undergo glycolysis, which occurs in cytoplasm, wherein there is partial breakdown of oxygen. This is basically a common pathway for both aerobic as well as anaerobic respiration. It is not an oxygen dependent. मतलब हम कह सकते कि ये एक एनारोबिक प्रोसेस होता है, लेकिन होता ये दोनों में है, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एज वेल एज करेक्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान. ये 10 स्टेप्स में डिवाइडेड होता है. और क्यों इतने सारे स्टेप्स में डिवाइड होता है, इसमें बेसिकली होता क्या है, तो यू विल हैव ग्लूकोज which tends to get broken down to pyruvate. Now, if I have to break down glucose into pyruvate, why do I require 10 steps and why can't this just occur in one step? So we require 10 steps is because जितने ज़्यादा steps होंगे उतने ज़्यादा you will have ATP release और energy that has been released. तो हर एक स्टेप में थोड़ा 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 एनर्जी रिलीज होते जाएगा, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलने के चांसेस है. तो एक सिंपल कंसेप्ट होता है कि जितने कम स्टेप्स होंगे उतने कम एटीपी प्रोडक्शन होगा, और जितने ज़्यादा स्टेप्स होंगे उतने ज़्यादा एटीपी प्रोडक्शन होगा, जिस वजह से ग्लाइकोलिसिस में देयर आर 10 स्टेप्स which are being in which the glucose and pyruvate breakdown is being done, right? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन टू पायरुवेट इज डन इन 10 स्टेप्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके हमको. ऑलराइट बेटा, अब इसमें दिस पाथवे वाज वेरी फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट विच इज़ एमडन, मेयरऑफ एंड पार्निस, बिकॉज ऑफ विच दिस पाथवे इज ऑल्सो कॉल्ड एज EMP पाथवे. ऑलराइट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या और कैसे होता है. वी कैन ऑल्सो मैंशन वन मोर थिंग दैट जब ये 10 स्टेप्स में डिवाइडेड है तो ये सारे 10 स्टेप्स जो है उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट 5 दैट वी हैव इज कॉल्ड एज preparatory reactions or preparatory phase, and the remaining 5 that we have can be identified as oxidative because that's where the oxidation reaction takes place, or you can also call it as payoff phase. So you can call it as oxidative or you can also call it as payoff phase. All right, let's go ahead. Let's try to understand this pathway. So sure it is. Now when you talk about
ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, जब हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले स्टेप में यू हैव ग्लूकोज दैट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू, alright, you have glucose that gets broken down into glucose 6 phosphate with the help of an enzyme called as hexokinase. इस रिएक्शन के दौरान एक एटीपी मॉलिक्यूल जो होता है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है. सो दैट मीन्स देयर इज यूटिलाइजेशन ऑफ वन एटीपी मॉलिक्यूल. फर्दर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी ग्लूकोज के 6th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगाया जाता है, वो फॉस्फेट आता है एटीपी से. यहाँ पे जो उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. When glucose 6 phosphate gets converted to fructose 6 phosphate, this happens with the help of an enzyme which is called as phosphohexoisomerase. ठीक है, you call it as phosphohexoisomerase. Fructose 6 phosphate further have one more phosphate group added to it, which is nothing but becomes fructose 1,6 biphosphate. एक और फॉस्फेट जो ऐड हुआ है वो वापस से एटीपी के टूटने से बना है, एंड इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए एंजाइम विल बी फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज. ठीक है, वी विल हैव फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज. ऑलराइट, phosphofructokinase further gets divided into two chemicals. One is triose phosphate, which is glyceraldehyde 3-phosphate, can also be called as 3-phosphoglyceraldehyde. In short, written as PGAL. The other chemical that is being made is dihydroxyacetone phosphate, which is also written as DHAP. And this reaction is being catalyzed by an enzyme called as aldolase. The enzyme responsible to catalyze this reaction, that is a breakdown of 6 carbon fructose 1,6 bisphosphate into 3 carbon PGAL and 3 carbon DHAP, is called as aldolase. Right? Now, DHAP is an unstable compound. It immediately gets converted to a stable compound, which is nothing but PGAL. And this happens with the help of an enzyme isomerase. The enzyme responsible to catalyze this reaction, I'll write it over here, is isomerase. Okay, the enzyme is isomerase. There I just zoom this part. The enzyme is isomerase. Alright, यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा, यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा, अब तक जो भी हमने किया, there are 5 steps that we did, which is first, second, third, fourth, and this fifth. So there are 5 steps which are done. These 5 steps together can be called as preparatory phase. Okay, we can identify this to be as preparatory phase. Alright, post that the remaining 5 steps that we'll be discussing so far can be called as oxidative, or you can call it as payoff phase. इस फेस में एग्जैक्टली हो क्या रहा है? सो जो ग्लिसरल्डेहाइड 3-phosphate है, that will get converted to 1,3-diphosphoglyceric acid या bisphosphoglyceric acid. ठीक है, that is 1,2-di-PGA is formed. When aldehyde gets converted to acid, you have removal of hydrogen, and that removal of hydrogen has been accepted by something called as NAD, converting it into NADH2. The enzyme involved in doing this reaction will be called as dehydrogenase.
However, if you notice, you have two molecules of 1,3 bisphosphoglyceric acid which is formed, यानी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा एक 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में. अगर दो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है तो दो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेंगे. करेक्ट है यहाँ तक बेटा? अब ये जो कन्वर्जन हो रहा है उसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में एक ही फॉस्फेट था, नीचे दो आ रहे हैं, तो ये दूसरा फॉस्फेट कहाँ से आ रहा है? सो दूसरा फॉस्फेट आता है by a chemical called as H3PO4. You have H3PO4 from which the phosphate comes and gets binded to the first carbon of this phosphoglyceric acid. 1,3-diphosphoglyceric acid gets converted to 3-phosphoglyceric acid, that is two molecules of 3-phosphoglyceric acid. एक मॉलिक्यूल कम हो गया फॉस्फेट का, तो दैट ऑटोमेटिकली इज बीन यूटिलाइज्ड बाय एटीपी for formation of first ATP molecule. The enzyme involved over here becomes phosphoglycerolkinase. 3-phosphoglyceric acid gets converted to 2-phosphoglyceric acid, that is two molecules of 2-phosphoglyceric acid. The enzyme involved here is phosphoglycerol mutase, which is nothing but basically isomerism. Furthermore, 2-phosphoglyceric acid can get converted to two molecules of phosphoenol pyruvic acid, also written as PEPA, during which there is one molecule of water released and the enzyme involved is enolase, because you have enol group formed over here. Phosphoenol pyruvic acid finally gets converted to pyruvic acid, wherein phosphate is removed, which will be accepted by ADP to form ATP molecule, and the enzyme is pyruvate kinase. The enzyme is pyruvate kinase. Alright, beta? And that's how your entire glycolysis gets ended over here, where from one glucose molecule you have two pyruvic acid being formed, and this entire reaction is divided into 10 steps as we've just discussed. Alright, एक चीज़ जो हमको ध्यान रखनी है हमेशा इस दैट बेटा कि प्लांट्स में जनरली जो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं वो तीन फॉर्मेट में हमको दिखाई देंगे. जब बनता है, when it is formed in the form of glucose. जब बनेगा तो ग्लूकोज के फॉर्म में बनेगा. जब वो स्टोर होगा तब वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा, और वहीं पे जब वो ट्रांसपोर्ट होगा तब वो सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा. तो यहाँ पे ये जो ग्लाइकोलिसिस हुआ है उसमें sucrose is generally a substrate that has been used, wherein basically aerobic respiration, wherein sucrose gets broken down into glucose plus fructose, wherein glucose enters in the pathway and you have this entire pathway which is formed. Fructose, what we have, it gets converted to glucose isomerism के द्वारा, and then it enters in the pathway and thus continues further. Alright beta? So ideally whatever we've understood so far in this, there's a net reaction that we have, ठीक है, wherein you have glucose molecule along with 2 ADP molecule, ठीक है, or rather we would say 2 ADP molecule, plus I will have 2 NAD molecule, which will provide us with 2 molecules of pyruvic acid, plus it will provide us with 2 molecules of ATP, plus it will provide us with 2 molecules of NADH2 as well as 2 molecules of water which are released over here. Alright, I'll show this, yeah. So this is nothing but
identified to be as net reaction of glycolysis. ठीक है बेटा, इससे हम कहते हैं नेट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस. तो इस हिसाब से अगर क्वेश्चन हमें आता है कि कितने एटीपी बनते हैं, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, then in that case your answer will be 2 ATP. How many ATPs are formed during glycolysis? If that comes as your question, then you will have to modify the thing. How do we modify? So for that, what do we do? Simple. For that, you do a very simple calculation over here. And what is that simple calculation? Herein हमें क्या करना होगा? We have to firstly identify कि कितने ATP molecules बने. So when you talk about ATPs formed, then there are 4 ATP that are formed. How 4, sir? Check. एक यहाँ पे बना, एक यहाँ पे बना, बट ये रिएक्शंस 2 बार ही हुए, तो बाय डिफ़ॉल्ट यू से दैट यू हैव twice the amount of ATP formed, right? Meaning 2 to the 4. So we write 4 over here and we say that there are 4 ATPs formed, right? Then out of this 4 ATPs that are formed, you also have NADH2 which is formed. अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक NADH2 जो है वो 3 ATP देने की काबिलियत रखता है, तो ऐसे 2 NADH2 बनी है. सो यू विल गेन 6 ATP molecules from NADH2. However, this occurs during ETS. When this NADH2 enters in ETS, that is electron transport system, that's when you have 6 ATPs formed. But then ultimately ये आया कहाँ से? ग्लाइकोलिसिस से, इसलिए यहाँ पे उसे कंसिडर कर रही है. So total we have 10 ATP which is obtained. Out of this 10, 2 ATP तो हमने पहले वाले स्टेप में यानी प्रिपरेटरी फेज में यूज़ कर लिए, तो इस वजह से the total ATP that you obtain is only 8, and this is the total gain of ATP during glycolysis in aerobic respiration. All right, I hope the concept is clear. एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान सिर्फ 2 ATP मिलते हैं, बिकॉज जो 4 हमें यहाँ पे मिले उनमें से 2 माइनस हो जाएंगे, ये वाला नहीं बनेगा, जिस वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP कहा जाता है. ऑलराइट बेटा, सो दैट्स वेयर वी कम टू द एंड ऑफ योर फर्स्ट कंसेप्ट, दैट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ योर एरोबिक रेस्पिरेशन, विच इज़ नथिंग बट glycolysis.